Start, please. Okay, friends, let me welcome all of you once again to this program, which is on finance or non-finance. Uh, we are passing through very difficult times, as we all know. This is something which is absolutely unprecedented that has ever happened in the history of the humankind. Uh, and on to top it further, all of us are sitting in our homes, facing the lockdown. But at the same time, I always feel that every problem is an opportunity. So every problem is an opportunity, and I think this lockdown is also an opportunity for every one of us to upskill ourselves in one way or the other. And one area which I am sure all of you would have realized today, one area where uh, I think somebody's microphone is not mute. Yeah. Okay. Thank you. So one area where all of us need to continuously enrich ourselves and update ourselves is the area of finance. And when Neeraj spoke to me, in case if I would do this 1 hour session with all of you, and I very gladly accepted that offer from Neeraj, and I would also thank Neeraj and every one of you. Now, friends, finance is one area which you just cannot afford to ignore, irrespective of what is the function that you are in. You may be in marketing, you may be in purchase, you may be in vendor development, you may be in international business or whatever. Finance is something which we have to ensure that we are fully accustomed with. And why is that so? And it is because, remember, the industry is going to be full of shocks and surprises in all the times to come. So it is not that this is first time it is happening with us and we are facing a situation like this. These kind of situations will keep on happening, and we as executives and also as the business will need to ensure that we are always prepared for all kinds of challenges. And one thing that would help us in ensuring that we are prepared to face all those challenges with tremendous amount of confidence is our knowledge of finance. And let me tell you, friends, at this point in time, contrary to popular myth, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फाइनेंस बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए। और मैं हकीकत बताऊं कि अगर दुनिया में सबसे आसान कोई चीज़ है समझने के लिए तो वो है फाइनेंस। पैसे की भाषा है, सबको समझती है, पढ़े लिखे को समझती है और अनपढ़ को भी समझती है, अनपढ़ को और भी ज़्यादा समझती है। एंड दैट इज़ हाउ फ्रेंड्स यू विल नो दैट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस मैनकाइंड, the best of the finance brain that ever existed on the earth never had any formal education in finance. Dhirubhai Ambani never went to IIM Ahmedabad or any other institute of management for that matter. Steve Jobs, or for that matter Bill Gates, we all know that they are all college dropouts. And despite the fact that they were college dropouts, nobody understands finance better than these people. And this is what at the beginning, at the outset, I would like to highlight, that finance is very easy to understand, and this is one message that we must put in our system. Now let us understand, and the objective with which I have in my mind in this session with you is to empower you as to कि जो फाइनेंस की जो नॉलेज है हम किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं to do the analysis of our vendors. Now remember, post corona, industry is going to face tremendous amount of challenges. Doesn't really matter आप small हो, medium हो, big हो, micro हो, सबको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम आने ही वाला है. And everybody will be looking for support from all sides, and that is where we will need, as the people belonging to a function of procurement or purchase, we will need to empower ourselves as to how to understand the balance sheet, how to understand the financial statement of a company, how to find out by looking at the P&L and the balance sheet of a company कि भाई ये वेंडर की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. And I'm sure this will empower you to take very good decisions as regards your approach towards the different vendors that you have. And here I would like to start with two things. Number one,
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमको फाइनेंस में एक्सपर्ट होने के लिए, फाइनेंस में अच्छा होने के लिए, फाइनेंस में एफिशिएंट होने के लिए, फाइनेंस में इफेक्टिव होने के लिए हमको बहुत दुनिया भर की नॉलेज हासिल करने की जरूरत नहीं है. It is not that to be good in finance you have to be a chartered accountant, cost accountant, company secretary or an MBA. No, you just need to understand two simple statements. And what those two simple statements are, they're very simple. This first statement is the profit and loss account. And let me tell you, and I'm going to explain to you one by one as to what does this P&L statement contains. But for the time being, please understand, we have to understand the first statement, which is profit and loss statement, and the second statement that we need to understand is the balance sheet. Now let us understand what is profit and loss. बहुत सिंपल है. प्रॉफिट एंड लॉस एक स्टेटमेंट है जो मुझको बताता है कि इन माई बिजनेस हाउ मच इज माई इनकम एंड इन माई बिजनेस हाउ मच आर माई एक्सपेंसेस एंड द डिफरेंस दैट आई गेट इज माई प्रॉफिट और माई लॉस. सो मीनिंग व्हाट? मीनिंग अगर मैं एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखता हूं तो आई विल लुक एट कि उस कंपनी की इनकम कितनी है और उस कंपनी के सारे खर्चे कितने हैं. अगर कंपनी की इनकम ज्यादा है, खर्चे कम है, इसका मतलब इट इज अ गुड कंपनी. और कंपनी की अगर इनकम कम है, खर्चे ज्यादा है, दैट मीन्स इट इज अ बैड कंपनी. एंड फ्रेंड्स रिमेंबर, इट इज रियली दैट सिंपल. इट इज रियली दैट सिंपल. अब इस P&L को हम इस्तेमाल करते हैं टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी इन अवर बिजनेस. एंड हाउ डू वी यूज द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी इन अवर बिजनेस? इज वेरी सिंपल. अब देखिए, अगर मेरी इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, एम आई इन ट्रबल? एंड द आंसर इज यस, I am in trouble because I have got less income, more expenses. That means I am incurring losses. That means something has to be done. Now tell me what has to be done. Again, it is very simple. Two things have to be done, and what those two things are, the first thing that has to be done is, number one, do everything possible to ensure that your income is maximized. वो सब करिए जिसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ेगी. Second thing, what you need to do everything possible to ensure that your expenses go down. And really speaking, it's not that you have to do either of the two. Really speaking, as a growing organization, as a development focused organization, as a responsible organization, what you need to do, you need to work on both of them simultaneously. Now, one thing that I would like to highlight here, and I would like to really emphasize, and all of you must make note of it. Unfortunately or incidentally, we worry about the financial management only during the trouble times. Whereas the kind of efforts that we take during the trouble times, अगर हम उतनी ही मेहनत अच्छे समय में करें तो मैं आपको भरोसे से बोल सकता हूँ, 100% कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ऐसी कंपनी को कभी ट्रबल आएगी नहीं. बट समटाइम्स वी टेंड टू बी कॉम्प्लेसेंट. नाउ लेट्स लुक एट ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है क्या और ये अपने को क्या क्या बताता है. सबसे पहली बात, और ध्यान से सुनिए, सबसे पहली चीज, द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट टेल्स मी व्हाट इज माय इनकम. तो सबसे जो ऊपर जो फिगर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, दैट इज माय सेल्स. ये सेल्स को हम टॉप लाइन भी कहते हैं. और इसको क्यों टॉप लाइन कहते हैं? सिंपल सी बात है, इसको टॉप लाइन इसलिए कहते हैं कि ये जो लाइन है वो प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के टॉप में आ रही है. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज टॉप लाइन. नाउ उसमें से क्या करेंगे हम? सेल्स में से हम माइनस करेंगे. क्या माइनस करेंगे? दो खर्चे माइनस करेंगे. कौन कौन से खर्चे माइनस करेंगे? पहला खर्चा हम माइनस करेंगे जिसको बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट. दूसरा खर्चा हम माइनस करेंगे जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. So that means what? That means from the figure of my sales, I will minus the figure of material cost that I have incurred in producing the goods, and I will also reduce from the figure of the sales the manufacturing expenses. That means the expenses which I have incurred in converting the raw material into a finished products. तो अब क्या होगा? तो सेल्स में से मैं माइनस करूंगा मटेरियल कॉस्ट और मैं माइनस करूंगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. मेरे हाथ में क्या आएगा? मेरे हाथ में आएगा, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. अब एक चीज समझ के लीजिए, एज समवन वर्किंग इन द प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, एज समवन वर्किंग in the purchase department, this ratio, this number becomes very crucial for you. And please pay attention why this number becomes very crucial for you. So now what you have, you got the figure of sales
एंड यू गॉट द फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. अब आप क्या करिए, आप इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करिए. कैसे करेंगे इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? बहुत सिंपल है. ग्रॉस प्रॉफिट को न्यूमरेटर में रखिए और सेल्स को डिनोमिनेटर में रखिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए. एंड व्हाट यू विल गेट इज द फिगर विच इज नॉन एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. अब आप सोचेंगे कि ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? आपके लिए इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. क्या इंपॉर्टेंस है? अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इस कंपनी के साथ में आपको निगोशिएशन करने में बड़ा स्कोप है. बड़ा स्कोप क्यों है? क्योंकि इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है. एंड प्लीज रिमेंबर, ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा कब होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा टू सिचुएशंस में होगा. नंबर वन, व्हेन द सेल्स इज वेरी गुड, and number two, when the material cost is low. So if the company is showing a very high gross profit ratio, that means there is a scope for reducing for negotiating the prices with this company. Okay, so after you deduct from the sales the material cost and the manufacturing expenses, what you get in your hand? You get in your hand something which is known as gross profit. अब उस gross profit में से आप क्या करेंगे? उस gross profit में से आप माइनस करेंगे अगली कॉस्ट. अगली कॉस्ट कौन सी है? अगली कॉस्ट है सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. इसको SG&A भी कहते हैं, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. इसका मतलब क्या है? SG&A का मतलब क्या है? SG&A का मतलब है, प्लीज पे अटेंशन, SG&A का मतलब है all the expenses that the company is incurring on the selling, administration and the general expenses. That means all the expenses other than the manufacturing expenses are known as SG&A, selling general and administrative expenses. तो इसमें सारे वो खर्चे आ जाएंगे. अब प्लीज पे अटेंशन. तो ग्रॉस प्रॉफिट में से what will you minus? From the figure of gross profit, you will minus the SG&A, the figure of SG&A, and what you will get in your hand is known as EBITDA. EBITDA is EBITDA. EBITDA. बीच में मैं रुक रहा हूँ. हाँ, ओके. आपके पास कुछ ऐसे कुछ रहेगा तो आप इनके ऊपर में शेयर करते हैं सर. आप जो बता रहे हो बहुत सारे, मतलब मेरे तो याद नहीं रह पा रहा है. अगर सामने दिखता है तो कुछ समझ. But are you not recording it? Are you not recording it? Something to be displayed that will be easy to get it. Yeah, I know, but the problem is when I try to Gajanan, can you hear me? Yeah, I'm hearing you. The recording is being continued from my side. Okay. So, whoever want details, I can share the recording also. Yeah, very good, very good. You can do that because see, the moment I try to share the PPT video online, my I don't know, my speaker gets muted. So even if I want to share, I can't share anything with you. Can you give it to Gajanan? Can you email in Gajanan? हाँ, ओके. सो देखो, दो चीजें हैं. एक तो आपको गजानन ये जो सेशन चल रहा है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग का लिंक आपके साथ में शेयर करेंगे तो आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. और दूसरा, जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ उसकी पीपीटी भी मैं उसको उनको मेल कर दूंगा. पर आपको मैं एक चीज बता दूं कि मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत एक दो पीपीटी है बस, खाली दो ही स्लाइड्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. एंड आई विल शेयर बोथ दी स्लाइड्स विद गजानन एंड हु इन टर्न विल शेयर इट विद यू. इज दैट फाइन? सर गजानन को अभी आप मेल कर दीजिए और गजानन विल पुट ऑन द स्क्रीन. All right. All right. Okay. So give me a minute. Let me just do it quickly. Please, sir. Also, sir, your sound is breaking in between. Can you please repeat the last thing which we were discussing about selling ground? Yes. Definitely. तो आप बताइए कौन सा पार्ट आपको सुनाई नहीं दिया तरीब बराबर?
Sir, SGNA. Okay, all right, okay. So give me a minute. I'll just mail this to all of you, and then I will also explain the SGNA to all of you. So no worry. Just give me a minute. Uh, okay. And in the meantime, when I am trying to mail this to Gajanan, all of you can write down your doubts, whatever they may be, and at some point in time, we will discuss directly. So, just trying to quickly mail this to you. I hope I'm able to do it. I have Gajanan's mail ID with me. And this is where it is. So yeah, okay. Yes, we can see it now. What can you see now? See one Excel sheet which I have shared. Pramod sir, Uh-huh. I have shared on Excel sheet which has the profit and loss and balance sheet. Okay. Can you see that? 1 second. Uh, Is it visible? yeah, I can see Yeah, that. I can see that. I can Yeah. see that. Yes. Okay, but I will not use this one because otherwise the Neeraj, let him use his one. Don't Yeah. put yours because again there will be the different direction. It will go in a different direction. correct. Okay. So There is a flow with him. Let him continue with that flow. I have just mailed it to Gajanan and some of you. You would get it. So and you must have got it already, I suppose. Have you? Pramod sir, I am waiting. Bill is not received. I will as it received I will publish. Yeah. So I've just sent it to you. So I've just mailed. जो आपका जो मेल आया था ना मुझे इनविटेशन के लिए, तो मैंने उस पे जितने भी एड्रेसेस थे सबको मेल कर दिया है एक साथ. So I think it should reach you sooner than later now. Should not take much time. Okay. Yep. The other option which we have, Huh. if you really want to quickly give some demonstration is you go to the upload sign and you will have a Microsoft whiteboard there. So you can upload that whiteboard and type on that whatever you're saying so that people understand it. If It at may all be. we are not able to manage the mail part. Yeah, see, I tell you, to make all those R&D at the last moment will be a little bit difficult. But don't worry. Let's go the way it's going. Check whether the mail has gone through your outbox. Yeah, now it is visible. Yeah, it's gone. Slide is appearing. You start, sir. Please start. Yeah, everybody. Yeah, it's visible. Started is slide, and additionally, mail is there available with everybody on their mailbox. Okay, so I am operating this slide from my end. Don't worry. Okay. Oh, sir, please continue. Okay, good. Okay, very good. So now the slide that you must be opening in front of you is the statement. Okay. Go to slide number 3, Gajanan. Good. Yeah. So go to slide number 3. Yeah, very right. Okay. Good. Very good. Yeah. Go to the next one. Yeah. Okay. Right. So this is where we were, and as you can see on the screen, the first thing that you have is the sales, and as I was telling you, from the sales, what you do? From the sales, you minus the material cost and you minus the manufacturing expenses. What you get in your hand is your gross profit. And remember, अगर एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट अगर ज़्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ज़्यादा है, that means there is a scope where you can do the negotiation. Because
Okay. Now, from the gross profit, what do you do? From the gross profit, you minus the SG&A. And as I said earlier, what is SG&A? And somebody was asking me, SG&A is selling, general and administrative expenses. अब देखिए, समझ के लीजिए कि किसी भी बिजनेस में दो तीन तरह के खर्चे होते हैं. One is manufacturing cost, and second is administrative and general cost. And then, of course, you have a depreciation and the finance cost. Now, Neeraj, the slide is gone from my screen. Is that fine? Again, I think you shared. I have not. I shared it again. I have not. Please. I have not done anything from my side. Yeah, exactly. And keep it uploaded so that people can see it and change the slides the way he's telling you. Yeah. So I will mention it to you when it is to be changed. Now the slides are visible. Okay. Right. So from the gross profit you minus SG&A. SG&A में से आप माइनस करोगे तो आपके जो हाथ में आता है उसको बोलते हैं EBITDA. EBITDA. One question from my side. Here is Praveen Patil. For example, if there are any suppliers who are technologically very advanced, and see what type of their gross profit is, whether they transparently put the material cost and Praveen, please keep all questions last. Otherwise, we'll completely go away with the rhythm. Let's first complete it. Note down the questions. Then at the end, we'll ask. Yeah, I think. Okay. Yeah. I will. You can use chat box for to write the question so that you will not miss it. Oh yeah, okay. And what I will do is, for sure, I will ensure that before we close, I take all your questions. So you can please write down your questions with you, and once we finish the session, that time I will take all the questions simply. So EBITDA, remember friends, EBITDA is very, very important number for any business. And I can tell you, whether it is the Tata Group, or it is the ArcelorMittal Group, or it is the Ambani Group, any group, all these top people, whether it is Mr. Ratan Tata, or it is Mr. Mittal, or it is Mr. Mukesh Ambani, or it is somebody else, all of them are always interested in one number of their companies, and that number is this EBITDA. And why this number EBITDA is important, and that is what we all must understand. This EBITDA is what? This EBITDA is the cash operating profit from the business. And please understand, what gives long life to a business? The cash gives long life to a business. And cash, remember, can come from many sources. Cash can come by way of loan. But the cash coming by way of loan cannot give a long life to a business. What will give long life to a business is the cash coming from its operations. And that is what is EBITDA is all about. So EBITDA is cash operating profit. EBITDA is the amount of cash that you are generating from your operations. And that is why everybody across the globe, every top businessman, every top executive, every top industrialist, every CFO, CEO are always interested in the EBITDA. So long as EBITDA of a business is good, this business is safe and secure. The operating risk of this business is much less than the business whose EBITDA is low. And this is, I would also like to mention here for the benefit of all of you, EBITDA, remember, also increases the borrowing power of a business. And that is what you must understand as to how the EBITDA would increase the borrowing power of a business. देखिए, जब हम पैसा उधार लेते हैं और बिजनेस में हमको पैसा उधार लेना होता है, हमको बिजनेस में पैसा क्यों उधार लेना होता है? इसलिए नहीं क्योंकि हमको उधार लेने का शौक है, इसलिए क्योंकि हमको बिजनेस की ग्रोथ करनी है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना है, सब कुछ करना है. हमको पक्का करना है कि हमारे बिजनेस की इनकम और वैल्यू क्रिएशन ज़्यादा हो. अब उसके लिए पैसा चाहिए. Every time it may not be possible that you have all the money in your pocket. So you need to borrow from outside. And when you borrow, please pay attention, जब आप पैसा उधार लेते हो, कैश आता है आपके बिजनेस में, पक्की बात है, लेकिन उस कैश के साथ साथ दो ऑब्लिगेशन भी आते हैं. And what are those obligations? Those obligations are, number one, you have to pay interest on that money.
and number 2, one day you have to pay back that money back to that lender. And before any lender decide to lend you money, he will look at your EBITDA. And why he will look at your EBITDA? Because you will be able to pay him interest from where? You will be able to pay interest only from your EBITDA. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी EBITDA weak है, तो where will you pay the interest from? If your EBITDA is weak, where will you repay the loan from? And that is the significance of the EBITDA. Now please understand, as the procurement executive, as the team from procurement or purchase, you need to look at the EBITDA of your vendor also, because this EBITDA of your vendor will let you know how efficiently the vendor is doing. How efficiently the vendor is doing. I think somebody has somebody has switched on the mute speakerphone. Please mute your mic. All right. So I think अभी भी किसी का चालू है. I think somebody's speakerphone is okay. That's good now. अब देखिए, अब EBITDA में से आप क्या करोगे? EBITDA में से आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, EBITDA में से आप माइनस करोगे एमोर्टाइजेशन, और अब जो आपके हाथ में बचेगा, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज नोन एज EBIT. EBIT is operating profit. EBIT is operating profit. Pramod, not coming. Pramod, sir, you are on mute. Can you hear me now? Can you hear me now, Neeraj? Yes, we Okay. can hear you. I don't know why does it happen. It automatically goes on the mute mode without I even touching the laptop. Okay. Anyway, so from the EBITDA you deduct the depreciation and the amortization. What you get in your hand is the operating profit. Operating profit में से आप माइनस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट, जिसको इंटरेस्ट कॉस्ट भी कहते हैं. अब आपके हाथ में जो बचेगा उसको बोलते हैं EBT. EBT इज अर्निंग बिफोर टैक्स. अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप माइनस करेंगे amount that you will pay to the government as tax, and what will remain in your hand is known as EAT, earning after tax. Now this is the entire profitability that you and I need to understand, and please remember, इतना ही समझना है. To be good in finance, this is what we need to understand. अगर हम इतना समझ गए तो हमारे लिए फाइनेंस के डिसीजंस लेना बहुत आसान होता है, एंड दिस इज व्हाट वी विल चेक. ओके, सो ओके, जनरली आई वुड आस्क यू. Sir, या hello. प्लीज Sir, प्लीज. just ये जो आप किया ना EBIT, हाँ EBIT के बाद EBT जो आया वो हो जाएगा, थोड़ा इनोवेट करेंगे. हाँ, श्योर, ऑफ कोर्स. अब देखो, EBIT इज योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड उसमें से आप माइनस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस, व्हाट इज फाइनेंस कॉस्ट? फाइनेंस कॉस्ट इज, एज अ बिजनेस आपने लोन लिया होगा, आपने वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया होगा, आपने प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया होगा. तो ये जो आपने लोन लिए हैं, इन लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, एंड दैट इज नॉन एज फाइनेंस कॉस्ट. तो EBIT में से, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स का जो फिगर है, उसमें से आप माइनस करेंगे फाइनेंस कॉस्ट. अब जो आपके हाथ में बचता है, दैट इज नॉन एज EBT, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स. और अर्निंग बिफोर टैक्स के में से आप माइनस करेंगे आपकी टैक्स लाइबिलिटी, जो भी आपके प्रॉफिट हैं. इनकम टैक्स के देयर इज अ सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके प्रोविजंस के हिसाब से आपकी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी डिसाइड होगी. That figure you will minus from your EBT, and what you get in the bottom is known as earning after tax. अब समझ के लिए डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हाँ. एंड सेलिंग, हाँ. ये जो टर्म्स है, हाँ. ये थोड़ा डिनोट करके बताएंगे तो अच्छा रहेगा. वेरी गुड, वेरी गुड. नो डिप्रिसिएशन एंड certainly, very good, of course. तो देखिए, डेप्रिसिएशन. yes ma'am. Gross profit दिया. Sir, please explain. Gross profit. What gross? Yes. Uh-huh.
तो ग्रॉस प्रॉफिट तो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सेल्स है आपकी, उसमें से आपने मटेरियल कॉस्ट माइनस करी और आपने मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे माइनस किए, तो जो आपके हाथ में बचा है दैट इज नॉन एज ग्रॉस प्रॉफिट. Okay, sir. Does that answer your question, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. अब जिनका जो सवाल है SG&A, अब देखिए एक चीज़ समझ के लीजिए, एंड वो बहुत सिंपल है कि हम बिजनेस क्यों करते हैं. और जब मैं बोलता हूँ हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम खाली टाटा मोटर्स, जब मैं बोलता हूँ हम बिजनेस क्यों करते हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ. दुनिया में लोग बिजनेस क्यों करते हैं? दुनिया में बिजनेस लोग इसलिए करते हैं क्योंकि दे वांट टू क्रिएट वैल्यू. People do business, most of them, they do business, they start business because they want to make the society a better place to live. A better place to live than what it was yesterday. This is the prime motive in the minds of the people behind running the business. अब अगर आपके बिजनेस में आप लॉस करोगे तो विल यू बी क्रिएटिंग वैल्यू? द आंसर इज नो. अगर आपके बिजनेस में आपके खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है तो इसका मतलब आप लॉस कर रहे हो, और लॉस कर रहे हो तो आप वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रहे हो. और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा दिनों तक एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे. उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि भाई बिजनेस की जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे होते हैं और उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, और उनकी अकाउंटिंग को समझना क्यों जरूरी है, सो दैट यू कैन पॉइंट आउट, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ कंसर्न, एरियाज विच आर गिविंग यू ट्रबल, expenses which are giving you trouble, expenses which are upsetting your profitability. तो उसके हिसाब से अब आप क्या करोगे? आप जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके जो आपके खर्चे हैं बिजनेस में, आप उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे. एंड प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू. विच आर दीज 4 कैटेगरीज? And they are very simple. They are very simple, and I am sure when I explain them these to you, you will automatically be able to connect and relate with them. Which is the first cost that you incur in any business? And the answer, of course, is obvious. The first cost that you incur in the business is your material cost and the manufacturing expenses. What is the manufacturing expenses? I think is something so simple. जो आप raw material को finished goods में convert करते हो, तो raw material को finished goods में convert करने के लिए जो भी खर्चे आप करते हो, whatever they may be, they are all referred as manufacturing expenses. अब एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, and I'm glad that this session is being recorded so that you would be able to see it at any point in time later also. Material cost और manufacturing expenses को मिला के उनको बोलते हैं COGS, cost of goods sold. So that means what? That means next time when somebody is talking to you and asking you as to what is your COGS, what he is really asking, he is asking what is your material cost and the manufacturing cost put together. Okay, so that is the one group of the expenses that you incur in the business. Which is the second group? Second group is That's the only thing I want to know, where is the salary expenses are being put in which head? ओके, वेरी गुड. देखो, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस. अब यहाँ पर हमको एक चीज़ समझनी होगी. योर सैलरी कैन बी ऑफ 2 टाइप. योर सैलरी कैन बी फॉर द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग. योर सैलरी कैन बी फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज सैलरी दैट यू पे टू द पीपल who are engaged in the manufacturing of the business, their salary will be part of the manufacturing cost. And the salary that you pay for other people, other than the manufacturing people, will be part of your selling, general and administrative expenses. I hope that answers your question. Yes, thank you. Sir Bakshi here. Okay. Sir Bakshi here. What does the principle of loan goes? Where does the principle? Okay, very good. I'm coming to that. I'm coming to that. Okay. Very good. So, okay, I'm coming. Conversion for manufacturing cost is not. Yeah, please go ahead. Hello. Yeah, please go ahead.
Is this conversion cost and manufacturing cost is the same? Is the conversion cost and the manufacturing cost is same? And the answer is yes. The answer is yes. See, why the answer is what is the conversion cost? Conversion cost is the cost that you are incurring for converting the raw material into finished product. So you may call it manufacturing cost, you may call it conversion cost. Both mean the same thing. Okay, so let's move to the last question that somebody had asked. Sir, for one question. I have one question. Okay, can I take the difference between the depreciation and amortization? That question came first, so let me follow FIFO, first in first out. तो पहले वो सवाल लेता हूँ, फिर बाद में जो सवाल है वो ले लूँगा. अब देखिए, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में डिफरेंस बहुत सिंपल है, समझ के लीजिए. इन एनी बिजनेस or in our own business, in Tata Motors, in all the companies that we have in the Tata Group, there are two kinds of assets that we are using for our operations. What are those two kinds of assets? The category of the asset is tangible assets, and the second category is intangible assets. Let us understand the difference between the tangible asset and the intangible asset. So what is a tangible asset? Tangible asset is an asset which I can see, I can touch, and I can feel. That is a tangible asset. So building, property, plant and equipment, computer, furniture, aircraft, train, ship. Now these are the examples of tangible assets because I can touch them, I can see them, and I can feel them. And then remember, and this is what you must note, please all of you make a particular note, that in the business there is another asset, and that is intangible asset. And by the way, intangible asset is sizable in amount. And what is intangible asset? Intangible asset is something that we cannot touch, we cannot feel, and we cannot see. Say for example, software. I think somebody has again unmuted himself. Please mute yourself. Please keep yourself muted. Please keep yourself muted. Okay, very good. Thank you. So, intangible assets are those that I cannot touch, I cannot feel, and I cannot see. The example is software. The example is technology. The example is copyright, brand name, logo, patent, design. Now, these are the examples of intangible assets. Now, remember, doesn't really matter whether an asset is tangible or intangible. Since you are using it in your business, the value of these assets is reducing every year, isn't it? So, a reduction in the value of a tangible asset because of the wear and tear, because of the use of this asset in your business is referred as depreciation. And reduction in the value of an intangible asset is referred as amortization. So this is the difference between the depreciation and the amortization. If I can tell you, and maybe you may like to make a note of it, what depreciation is for tangible asset, amortization is for intangible asset. So I hope that answers the question which somebody has asked about depreciation. Hello. Yep. Hello. Yes. Sir, just एक छोटा doubt sir, why separate nomenclature for intangible asset? Why cannot the nomenclature be same? Depreciation only for both. Okay. See, that's a very good question. But please understand, हम लोग accounts क्यों बनाते हैं? हम लोग reporting क्यों करते हैं? हम लोग रिपोर्टिंग इसलिए करते हैं ताकि क्लैरिटी हो, है ना? एंड दैट इज द रीजन वी ट्राई एंड ब्रेक ऑल द एक्सपेंसेस अंडर डिफरेंट हेड्स, बिकॉज इफ आई क्लब ऑल द एक्सपेंसेस टुगेदर एट वन प्लेस तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि सैलरी पे कितना खर्चा हो रहा है, मटेरियल पे कितना खर्चा हो रहा है, रेंट पे कितना खर्चा हो रहा है. Okay, it got disconnected and we are reconnected once again. Hello sir. आवाज नहीं आ रही सर. Yeah, can you hear me now? Hello. Yeah, can you hear me? Yeah, now
Okay, very good. So I was answering the question. Somebody asked me as to why to show tangible and the intangible separately. The answer, of course, is very simple. The answer in business, you would like to know the complete situation section wise. तो अगर मैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को कंबाइन करूंगा तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें से कितना इज ऑन अकाउंट ऑफ टेंजिबल एसेट्स और कितना ऑन अकाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स. So that is the reason why everything is broken into as many segments as possible. Okay, I hope that answers your question. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Thank you. Thank you. Machinery is an example of intangible amortization. Just examples, just to understand. Yeah. Intangible, as I said, the copyright है, design है, patent है, software है. Now these are all goodwill है. These are all examples of intangible asset. Sir, if machinery is fully depreciated, Yeah. but it is working, then what would be the repercussion on this account? Okay, I can tell you. देखो, एक चीज हमको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट द ओनली थिंग इज आई विल टेक दिस क्वेश्चन क्विकली एंड देन वील मूव. देखो, बहुत सिंपल सा है कि ये हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, जरा समझ के लीजिए. डेप्रिसिएशन हम इसलिए चार्ज करते हैं क्योंकि प्लीज रिमेंबर, डेप्रिसिएशन इज अ नोशनल कॉस्ट. Depreciation is a notional cost. Depreciation is a non-cash expense. But why do we charge depreciation? We charge depreciation for the simple reason क्योंकि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले हमने एक एसेट खरीदी, और जब हमने वो एसेट खरीदी तो उसके लिए हमने पेमेंट किया, और हमने वो पेमेंट किया तो वो पेमेंट उस साल में हो गया. लेकिन वो जो एसेट है हम अब उसको यूज कर रहे हैं. वो अगर एसेट को हम यूज कर रहे हैं तो उसका जो यूज हो रहा है, उसका जो वेयर एंड टेयर हो रहा है, इट हैज टू रिफ्लेक्ट इन अवर कॉस्टिंग. इफ आई डोंट चार्ज डेप्रिसिएशन एंड इंक्लूड एज पार्ट ऑफ माई कॉस्टिंग, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन, तो क्या होगा? माई कॉस्टिंग विल बी, आई विल बी डूइंग अंडर कॉस्टिंग. I will be doing under costing. If I do under costing, what is the danger? The danger is I will be doing underpricing. And if I do underpricing, what is the danger? If I do underpricing, my product will sell like a hot cake. But every time when I sell it, I am going to make loss. So that is the reason why you have to charge depreciation. अच्छा, now coming to your point कि वो पूरा मशीन पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो चुकी है, अब उसका क्या इम्प्लीकेशन है? उसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं है. अभी आप समझ के लिए तो ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया सवाल है. ऑल ऑफ यू मस्ट पे अटेंशन. अभी क्या है, आपकी मशीन पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है यू हैव टू थ्रो इट आउट. कीप यूजिंग दैट मशीन, कीप यूजिंग दैट मशीन. You are using that machine and you have no cost coming in your P&L on account of depreciation. So that means this is a bonus. That means your profitability is going to be stronger. Only thing that you must remember and you must pay attention, and especially when I am talking about from the perspective of when you are trying to sell your product, when you are in a marketing team. In marketing team, please pay attention, all of you. In marketing team, if your asset is fully depreciated, जब आप कॉस्टिंग कर रहे हो तो फिर भी आप समथिंग यू मस्ट ऐड ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, दिस बोनस दैट यू हैव बिकॉज योर मशीन इज फुल्ली डेप्रिशिएटेड, इफ यू डोंट ऐड डेप्रिसिएशन इन योर कॉस्टिंग ऑफ योर प्रोडक्ट, द बोनस ऑफ डेप्रिसिएशन विल गेट पास्ड ऑन टू योर कस्टमर. कॉन्शियसली यू मे डिसाइड to share part of it with your customer, that's a different story, but unknowingly it should not happen. I hope I have answered your question. Sir, you told that the machine was bought in a year. Yeah. Are you saying that in that year that cost was not shown to anything in your PL account? Very good. Okay, very good. I am showing that product, then why the depreciation should be shown in the Okay, next year? all of you please pay attention, because I can understand this question that you are asking is a question that must be in the minds of many of you. अब यहाँ पर हमको एक चीज समझना जरूरी है, और प्लीज समझ के लीजिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि दो स्टेटमेंट्स हैं, एक P&L है और एक बैलेंस शीट है.
एक P&L है और एक बैलेंस शीट है. अब जरा ध्यान से सुनिए, और लकीली द सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड, सो यू विल हैव द बेनिफिट ऑफ रीप्लेइंग इट एंड अंडरस्टैंडिंग इट वंस अगेन व्हेनेवर यू वांट एट योर लेजर. अब ये समझ लीजिए कि P&L में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या आता है, तो आपको दोनों का डिफरेंस भी मालूम पड़ जाएगा. देखिए P&L जैसा कि नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में आता है इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आता है एक्सपेंसेस, राइट? सो दिस इज व्हाट विल हैपन. बैलेंस शीट में क्या आएगा? बैलेंस शीट में आएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एंड आई एम श्योर all of you understand the difference between the income and the expense and assets and the liabilities. तो ये जो आपका सवाल है कि जब आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो वो क्या आपके P&L में आया? वो आपके P&L में नहीं आया. वो आपके P&L में नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आपने एक एसेट खरीदी है और वो एसेट आपके पास में 15, 20, 25, 30 साल तक रहने वाली है एंड इट इज योर एसेट. सो इट विल गो इन योर बैलेंस शीट एंड नॉट इन P&L. लेकिन प्लीज पे अटेंशन, लेकिन आपने उस एसेट का ये साल में इस्तेमाल किया, यानी कि उस एसेट की कुछ वैल्यू कम हो गई, और वो जितनी वैल्यू कम हो गई उतना आपका नुकसान हो गया, उतना आपका खर्चा हो गया. सो दैट खर्चा विल कम इन योर P&L एज एन एक्सपेंस अंडर द टाइटल डेप्रिसिएशन. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. थैंक यू. ओके, गुड. हेलो Yeah. सर, एक लास्ट क्वेश्चन था सर. Please. ये अमोर्टाइजेशन से रिलेटेड जनरली सर हम लोग 10% जैसे मशीनरी जनरल रूल से 10% डिप्रिशिएट करते हैं. हाँ. या मे बी सम अदर नंबर. तो हाँ. अमोर्टाइजेशन में हाउ वी डिप्रिशिएट दिस सॉफ्टवेयर? और Okay. सर इसको मशीनरी को डिप्रिशिएट करने का तो फिर भी लॉजिक है कि देयर इज वियर एंड टियर एंड ऑल. तो व्हाट इज द वो उसको जो इंटेंजिबल है, आईपीआर है या वो सॉफ्टवेयर है, उसको डिप्रिशिएट करने का एक तो सर दो क्वेश्चन है कि लॉजिक क्या है सर, और दूसरा है कि व्हाट इज द वैल्यू जनरली 10%, 5% मतलब कितना करते हैं पर ईयर? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. अब देखो इंटेंजिबल एसेट को कैसे डेप्रिशिएट करते हैं, इसको समझने के लिए हमको एक चीज और समझनी होगी, और वो क्या? वो ये कि इंटेंजिबल एसेट कैसे क्रिएट होती है. और समझ के लीजिए, इंटेंजिबल एसेट वो डिज़ाइन हो, पेटेंट हो, टेक्नोलॉजी हो, यू नो व्हाट एवर इट मे बी, वो कैसे क्रिएट होती है उसके दो तरीके हैं. एक तो ये कि आप उसको इंटरनली क्रिएट करें. लेट्स से फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स हैज़ गॉट ह्यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज एन एक्टिविटी, एंड टाटा मोटर्स R&D डिपार्टमेंट इज कंटिन्यूसली working on developing new designs because they would like to cater to the market by bringing out new models every time. So now what is happening is every time Tata Motor is developing a new design, Tata Motor R&D is spending money on development of that design. So and you know, let's say for example the design work has been going on for last 3 years, और चौथे साल में वो डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट हो गया वो रेडी टू यूज़ हो गया, यानी कि नाउ टाटा मोटर्स कैन कमर्शलाइज दिस डिज़ाइन एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कार बेस्ड ऑन दिस डिज़ाइन. सो नाउ व्हाट टाटा मोटर्स विल डू, ये जितना खर्चा 3 सालों में इस डिज़ाइन के ऊपर हुआ, दिस होल अमाउंट विल कम in the balance sheet of Tata Motors as a patent, as an asset, isn't it? अगर आपका पेटेंट है, आप उसको ओन करते हो, तो आपकी एसेट हो गई. So it will come in the balance sheet of Tata Motors as patent. अब आपका सवाल ये है कि इसको हम कैसे amortize करेंगे. अब इसको amortize करने का तरीका ऐसा है, the marketing, the purchase, the top management, the technical team, the R&D, or everybody in Tata Motors will sit together and they will take a call कि ये जो डिज़ाइन हमने नया तैयार किया है, ये डिज़ाइन हमको कितने साल तक कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने के लिए आएगा. नाउ इफ दे डिसाइड कि भाई ये डिज़ाइन हमको 3 साल तक रहेगा, 3 साल के बाद में ये हमको फेज आउट करना पड़ेगा, इसको हमको क्लोज करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द पीरियड अवेलेबल टू यू फॉर कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ दिस डिज़ाइन? 3 years.
अब आप ये मान के चलिए कि आपने इसके ऊपर 30 करोड़ का खर्चा किया, यानी कि 30 करोड़ इज द अमाउंट दैट द टाटा मोटर्स हैज स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दिस न्यू डिजाइन. 30 crore is the amount that you have spent in designing this new design, okay, and 3 years is the period over which you would be able to use this design. After third year, you will have to close it and you will have to forget it, because after that you will have to introduce new designs, new models, and therefore this design or this model may not be in use. अब आप समझ सकते हैं कि हर साल आप कितना amortize करेंगे. The answer is 30 crore divided by 3 years. That means you will write off 10 crore, 10 crore, 10 crore for 3 years, and this is how you will do the amortization of the intangible assets. I hope that answers your question. Not be adding the interest, working capital interest on such things also. देखो अब जो वर्किंग कैपिटल का जो आपने लोन लिया है, have you taken that loan for the R&D work? Answer is no, isn't it? You don't take the working capital loan for the R&D work. You take the working capital loan for your operations. So therefore the interest that you will pay on the working capital will not form part of your design cost. And remember, understand this principle. So not only look at this answer from the limited perspective of your question, look at this answer in a wider perspective. मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी आप किसी खर्चे की अकाउंटिंग करना चाहते हो, आप उसको देखिए कि ये खर्चा किस चीज़ के लिए किया गया है. तो अगर ये वर्किंग कैपिटल का खर्चा, लोन, इंटरेस्ट है, इट इज़ फॉर द ऑपरेशंस, सो इट विल नॉट बी लोडेड ऑन टू द डिज़ाइन कॉस्ट. या, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Right. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. I have, sir, so this, I have one question here. So the assets that we buy, the tangible and intangible assets that we procure, Right. and which after completion of its warranty, Right. we also get into expenses related to maintenance of the assets. Right. So these costs are categorized under which section? Under administrative expenses? Okay, let me understand your question once again. So आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है ना, और वो प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदी, और अब उस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर आपको उसकी मेंटेनेंस के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ रहा है. करेक्ट, राइट? तो आपका सवाल ये कि ये जो मेंटेनेंस का खर्चा है, इसको आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इज दैट व्हाट योर क्वेश्चन इज? That's my question. ओके, अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एंड प्लीज पे अटेंशन. मेंटेनेंस दो तरह का हो सकता है. एक रूटीन मेंटेनेंस है, और एक ऐसा मेंटेनेंस है जिससे कि आपके मशीन की एफिशिएंसी बढ़ सकती है, मशीन की लाइफ बढ़ सकती है, मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है. तो अगर आप जो मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहे हैं वो रूटीन है, रूटीन मतलब अगर आप वो मेंटेनेंस खर्चा नहीं करोगे तो आपकी मशीन बंद हो जाएगी. तो ये जो खर्चा है, दिस विल बी नॉन एज योर ओपेक्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस. सो इट विल गो इनटू योर P&L. बट इफ यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एन इक्विपमेंट और अ प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से उसकी यील्ड बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ने वाली है मशीन की, तो ये जो खर्चा करोगे आप, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दिस विल बी ट्रीटेड एज कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर. दैट मीन्स ये जो खर्चा आप करोगे, ये आप उसकी एसेट में ऐड करके बैलेंस शीट में लेके जाओगे. या, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. One question I have. Okay. This depreciation is said after 10 years. Yeah. Or for a certain period of time, depreciation is getting stayed. Then still you have to add some amount of depreciation as expenses on your product. Okay. But in such cases, the product price is getting enhanced necessarily, and you may become uncompetitive in the marketplace. So, and there are some companies which are charging less depreciation on, and thereby gaining the market shares. So what do you do on this?
ओके देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये एक कमर्शियल डिसीजन है, और इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले अपने को जो डिटेल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको क्लोजली स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, एंड देन ओनली वी वुड बी एबल टू आंसर अ क्वेश्चन लाइक दिस, बिकॉज ऑफ कोर्स different companies will have different cost structure, and within different companies it is possible कि एक कंपनी का डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो सकता है, एक कंपनी का कम हो सकता है, वो भी दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. जैसा कि somebody was asking me previously कि मशीन फुली डेप्रिशिएटेड है. अब ऐसी कंपनी हो सकती है कि जिसकी मशीन फुली डेप्रिशिएटेड है तो उसको डेप्रिसिएशन का कॉस्ट नहीं है. तो ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अपने को सारे डिटेल्स देखने पड़ेंगे, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ कमर्शियल डिसीजन, बिकॉज अल्टीमेटली in business you have to grow, and for growing your pricing decisions can be driven by many factors. So we will have to really look into all the details, and then only I would be able to answer this question. But the bottom line is, it's a commercial decision which the vendor has to take. So if the vendor has to take that decision, we need to have the access to the information that the vendor has. Yeah. Okay, Yeah. Sir, my question is about that loan. Acha, Gajanan, excuse me, Gajanan, now it is 12:07, so it's fine with me. We can go on for another 10-15 minutes in case that's what you would plan. hello. Yeah. Can you hear me, sir? Yes, Neeraj, I can hear you. Please go ahead. Yeah, I think we will take the last question because of paucity of the time. Correct. There may be participants from other team, Yeah. other meetings. Right. So last question, that we have the vote of thanks from Yogesh Kulkarni, sir. Right. Hello. Yes, Neeraj. Hello. Last question. So last question, please. Hello, sir. Yeah, please go ahead. I can hear you. नीरज लेकिन अभी स्लाइड नंबर तो हुआ नहीं है. नहीं, hello. That is the main objective of the PNL. Correct. That's right. Yeah, Pramod sir is saying. Yeah. You know. Sir, where will the principal of loan will go? Okay. Very good. अब देखिए, that's I okay. think percentage, I think Okay, this is the last question, and then we will close. But before that, do not go by the number of slides that you see on your screen, because those number of slides are for my reference, and so our focus was on the P&L, and I'm really glad that we have really covered this P&L quite comprehensively. As a matter of fact, while discussing about the P&L, we have also covered the third slide as well. Now coming to this question, where will the principal loan will go? That is the question. Now remember, I just mentioned a little while ago कि दो स्टेटमेंट हैं, एक P&L है और एक बैलेंस शीट है. P&L में क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं. तो जो भी इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हैं, वो आपके P&L में आ जाएंगे. बैलेंस शीट में क्या आता है? बैलेंस शीट में आता है एसेट्स एंड लायबिलिटी. तो वो जो प्रिंसिपल लोन है, द लोन दैट द कंपनी has taken. I think someone has kept his okay. So loan, what is loan? Loan is a liability. So where will it go in the financial statements? It will go in the balance sheet. So the balance sheet will have two sides. It will have the assets on one side and the liabilities on the other side. So ये जो क्वेश्चन था कि वो प्रिंसिपल लोन है, वो अमाउंट कहाँ जाएगी? वो जाएगी बैलेंस शीट में, on the liability side. I hope that answers your question.
Pramod sir. Yep. Pramod sir. Yeah, thank you, Pramod sir. I think, dear finance for non-finance is a very big chapter, cannot be completed in 1 hour. So it takes maybe another 2 days or 3 days as a classroom session. So we had a very good glimpse from Pramod sir. Now I request Mr. Yogesh Kulkarni to have the thanks of Pramod ji. Yogesh Kulkarni sir. So, thank you, Neeraj. And first of all, thanks, Pramod ji. Hello. Yogesh sir, please unmute. And hello, are you able to hear me? Yes, I can hear you. Yes. Okay, so when it comes to balance sheet and P&L account and details which industries look at, it's a big subject and topic of, I can say, research. So for you to explain it in a friendly way by which people can understand, it was quite a big task, and the way you have done it in the last 1 hour, putting it into simple things and trying to explain it the way people would like to understand, people would understand it with relation to the things that they are doing. It's a great job from your side. We understand that a lot of queries are there, so probably I would request Neeraj to see if we can line up few more sessions on this, so that we can get into a little bit detail and further things which probably Pramod ji has to share with us and which can help us. So thank you, Pramod ji, once again. Thanks all the right. Thanks all the participants for joining and making use of these sessions which has been organized by people. So it will also keep us motivated during this difficult and subdued times and help us learn something from this period. Also, thanks to all the PNSQ heads who have adjusted their meetings and kept this slot free, because there was a suggestion which had come that we should keep specific slots. Mr. Pramod sir. Yeah. Sorry. Yeah, Yogesh sir, can continue please. Yeah, so thanks to all the PNSQ heads for keeping the slot free, and thanks to the HR team and the central team for creating this working opportunities and constructively working in this period of time to create these opportunities and help people remain motivated and connected with the things. So I hope we have more sessions like this and everybody participates. So that's all from my side, Neeraj. Leaving it to you to conclude the whole thing. Neeraj, just yeah, Pramod sir, you would like to say something? Yeah, yes. I also would like to thank you, Neeraj, Yogesh, Gajanan, and all the participants for being part of this session. And I would also, it's always a pleasure to do a program for Tata Motors, because all of you are doing truly wonderful job for the entire economy. Not only as a company but as a group as a whole. So thank you so much from my side to all of you as well. Thank you, sir. Dear participants, whatever the questions you have in mind, please send your email to Mr. Gajanan or me, so that we can pass on your question to Pramod sir, and definitely we'll get the answer. Thank you, participants. Thank you for joining the training. Thanks. We will have as Yogesh sir said, we will have the 3 or 4 sessions on this similar topic in future. Yeah, Gajanan, Thank you, Neeraj. Thank you, Gajanan. Thank you, Yogesh sir. Quite interesting. Thank you. Please share. Please register your attendance. Thanks. Presentation share किया है. Okay.